Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Benchmark stocks closed flat, losing gains of the afternoon session amid profit booking. Sensex finishes at 51,544. Nifty settles at 15,163. Rupee appreciates by 11 paise against the US currency, and global shares hover near a record high after mixed US economic data. घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार में मुनाफा वसूली के चलते शुरुआती तेजी गंवाकर लगभग बिना परिवर्तन के बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 51,544 पर बंद हुआ, निफ्टी 15,163 दर्ज हुआ। $1 की तुलना में रुपया हुआ 11 पैसे मजबूत, और अमेरिका से आए मिले जुले आर्थिक आंकड़ों से दुनिया भर के शेयर बाजार अपने उच्चतम स्तर के आसपास पहुंचे। घरेलू शेयर बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ। दोपहर कारोबार से पहले अच्छी खासी लिवाली देखी जा रही थी, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली बढ़ गई और प्रमुख सूचकांक कल की तुलना में घाटे के साथ चलने लगे। हालांकि बाद में एक बार फिर से लिवाली का दौर शुरू हुआ और आखिरकार सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली परिवर्तन के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 13 अंक यानी 0.2% बढ़कर 51,544 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंक यानी 0.7% की गिरावट लेकर 15,163 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों में भी यही रुख दिखा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.6% ऊपर आ गया, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.02% की गिरावट हुई। BSE, Sensex and NSE Nifty today ended almost flat, losing gains of the afternoon session amid profit booking and mixed global cues. Sensex gained 13 points, or 0.02% to close at 51,544 points, while the Nifty index fell 10 points, or 0.07% to 15,163. On the other hand, the broader market at the BSE also ended flat. The BSE Mid Cap Index was up 0.06%, while the BSE Small Cap Index depreciated by 0.02%. In the Sensex pack, shares of 10 companies climbed, while 20 logged losses. ICICI was the top gainer as it climbed 2.7%, followed by Axis Bank and Infosys, which gained by 1.4%. HDFC climbed 1.2% and SBI added 0.8%. On the other side, IDC declined by 4%. Sun Pharma and ONGC both plunged 2.5%. Bharti Airtel and Titan both fell 2%. In sectoral indices, 7 out of 19 sectors climbed. Bankex gained 1%, followed by Finance, which climbed 0.8%. On the other hand, Telecom plunged by 2% and Metal tumbled 1.9%, and FMCG stocks declined by 1.6%. Shares of oil and gas and consumer durable sectors fell by 1.4%. Overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,418 companies gained, while 1,560 declined. Shares of 156 companies remained unchanged. 301 companies rose to their 52-week high, while 36 companies fell to their 52-week low. रुपए की स्थिति पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 11 पैसे मजबूत हुआ, 72 रुपए 75 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.23% मजबूत होकर 90.63 पर पहुंच गया। And now we're joined by market expert and senior economic journalist Puneet Jain. Puneet, a very warm welcome to you on Market Mantra. Thank you, Arjun.
Well, Puneet, after speaking to you on Money Matters, at that point in time, we saw a drop in volatility. It fell further by 4.38% when the market closed at 3:30 in the afternoon. What is your read of the market right now? The market recovered after falling. What is your read really of the market right now? How are the participants behaving, the FIIs and the DIIs? So, Arjun, if you look at the market action as you just now narrated in the news item today, markets are somewhat uncertain about the future direction, or I would say rather the immediate direction, after hitting record highs in last few days. So we saw the markets advance quite sharply on Monday, and after that, for the whole week, we saw the markets fluctuate in a narrow range. And along with that, we also saw the volatility index, like you mentioned. VIX has fallen from level about 26, it has fallen to about 22 plus. So clearly, I think markets are kind of taking a breather. They're taking some time to decide which way to go, and probably they are looking for some news, or they're looking for developments or economic data. But the markets are right now very keen to move in either direction. What we see is that the institutional players, not only in India, across the world, the large FIIs or hedge funds, they continue to put money into equity markets. They continue to have this risk appetite for stocks. But retail investors are somewhat skeptical. Retail investors have been selling in India also. If you see, there have been large-scale redemptions in mutual funds. Even at the retail level, some investors have been offloading their long-held equities. So I think it's kind of a mixed bag right now. Markets are taking a breather, they're pausing, and I think they will wait for some more time, maybe a couple of weeks, before they take a very decisive move in either direction. पुनीत जी, यदि हम इस पूरे सप्ताह के गतिविधि को देखें तो एक दिन बढ़त, फिर उसके बाद 2 दिन गिरावट, फिर उसके बाद कह लें कि एक दिन की बढ़त, और फिर आज मामूली, यानी इसे हम ना बढ़त कहें ना गिरावट कहें, कुल मिलाकर जो पूरे एक सप्ताह का यह चलन दिख रहा है, और आपने वैश्विक बाजारों के साथ चर्चा यानी की ओर रुख करते हुए कहा कि दुनिया भर में यह चलन देखा जा रहा है कि जो संस्थागत निवेशक हैं वो इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, जबकि अपने यहाँ घरेलू जो छोटे निवेशक हैं वो उन्होंने अपने पूंजी बाजार से निकाली है। यहाँ पर हम यह समझना चाहेंगे कि यह जो क्रम है, यह जो सिलसिला है, वह आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगा, ये पहला सवाल। और दूसरा, बाजार में इस तरह की तेजी के बाद रुक रुक के थोड़ा सा नीचे गिरना, थोड़ा सा सांस लेना बाजार के स्वास्थ्य के लिए और जो निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उनके लिए कैसा परिणाम देने वाला रहेगा? मनोज जी, तो मैं आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब पहले देना चाहूंगा कि मार्केट्स में जो अब ये जो कंसोलिडेशन देख रहे हैं, या जो हम एक ब्रीदर जिसे कहते हैं वो देख रहे हैं, मुझे लगता है ये बाजार के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक बिल्कुल बहुत तेजी हमने देखी। यदि हम अप्रैल मई के बॉटम से हम देखें बाजार को, डबल हो गया इंडेक्स, निफ्टी जो है वो 15,000 के स्तर पे आ गया। और ये जरूरी है आपकी निवेशक ये उसकी जांच करें कि ये जो तेजी है ये एक फंडामेंटल तेजी है, या ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल तेजी है जो बहुत ज्यादा पैसा बाहर से आया उसने इस तेजी को फ्यूल किया है। मुझे लगता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इन्वेस्टर्स के लिए, और आने वाले 2-3 हफ्तों में इसका जवाब हमारे सामने आएगा। यदि ये लेवल्स सस्टेन हुए, जो करंट लेवल्स हैं वो सस्टेन अगर होंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है बाजार आगे आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगा। एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम पिछले सप्ताह को देखिए तो जो हेडलाइन इंडेक्सेस यानी निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है, इसमें हमने कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखा, लेकिन साथ ही अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें पिछले हफ्ते, उसमें 4% की बढ़त आई है। तो हालांकि हम देख रहे हैं कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वहां पर कुछ हद तक बाजारों में भी कोई रुख नहीं है, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप्स जो हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं कि वहां पर अभी भी बाइंग जारी है, और जो इकोनॉमिक अपटर्न है, जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसका असर जो छोटे मंझोले बिजनेस पे पॉजिटिव पड़ रहा है, उसका हम एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं मार्केट्स के अंदर। Puneet, we continually discuss about the movement of stock prices in the cash market, but when we look at the tactics of FIIs and DIIs, you mentioned about how redemptions are taking place by those who are holding mutual fund units, but usually the tactics employed are both in the cash and the derivatives market. So if you look at, say,
the example of Ashok Leyland, which declared a third quarterly loss, we are seeing a decline in the valuation in the stock market because of fundamental declaration before the investors. But we're also seeing a short build-up in the futures market, that there is a betting that yes, the prices will fall and therefore we will have a short build-up, we will have short positions. So there is short selling in the market right now. Isn't that true? If you just look at the trend right now, if you look at the way the FIIs and the DIIs are buying and selling in the market. So Arjun, usually whenever the markets are moving to a new level, you will find a lot of activity in derivatives market, because there are enough people who believe that this rally is not based in fundamentals, and they would go short on the market, assuming that this market will go lower. But I think these are all parts of a market. There will be buyers, there will be long build-up, there will be shorters, people who expect market to fall, and for every buyer there is a seller. So clearly markets are in this mixed zone. Particularly right now, when there's skepticism about the longevity of this rally, we find that this kind of shorting activity or speculative activity increases. However, if you ask me, I think this does not define where the markets will head in the next 1 or 2 years. I think what will define the direction of the markets will be, first, of course, the money flows, which is either from the domestic investors or from foreign investors, and secondly, the performance of companies. What we find, if you look at the research data coming from various rating agencies and various research houses, they're expecting the nifty companies and the corporate sector to post very handsome increase in earnings. They're looking at earnings growth in the range of 20 to 22% over the next 2-3 years. So clearly, I think markets are still expecting the numbers to improve. If you look at the valuations are really high. The PE multiple of Nifty right now, 1 year forward earnings is around 35, 36, which is historically very, very high figure. But my guess is that as earnings improve, things will become more attractive and valuations will come down, and we should see domestic investors return. Manoj had asked me earlier whether the trend of retail investors selling and institutional buying that will continue. I don't think so. See, usually one of these two guys will turn their views. Either FIs will become sellers in the market, or I think retail investors will return to this market probably from April onwards. पुनीत, यदि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखना चाहें तो बाजार में तरलता रही, जिसके चलते शेयर बाजार ऐतिहासिक गिरावट के बाद फिर से ऐतिहासिक ऊंचाई की ओर दुनिया भर के शेयर बाजार में देखे जा रहे। वैसे में जो वास्तविक अर्थव्यवस्था है, अपने कंपनियों के परिणाम की बात कही कि कंपनियों के परिणाम कैसा निकलेंगे उस पर निर्भर करेगा, तो माली हालत खासतौर से अपने देश की किस दिशा में जाती दिख रही, विभिन्न सेक्टरों को ध्यान में रखते हुए, और वैश्विक स्तर पर भी क्या दिख रहा कोविड के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए? मनोज, देखिए, नॉर्मली यदि हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी इज द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो इस वर्ष जीडीपी भारत में 7.5% कॉन्ट्रैक्शन की उम्मीद है। पर मार्केट्स, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्टॉक मार्केट्स कभी भी जो पीछे का डेटा है उस पर फोकस नहीं करती। स्टॉक मार्केट्स आने वाले वर्ष में या आने वाले समय के इकोनॉमिक डेटा को फोकस करती है। और हमारा उम्मीद है, और रिजर्व बैंक ने भी जो डेटा दिया है, जो आंकड़े दिए हैं, रिजर्व बैंक की उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 11% से ज्यादा होगी। 11% प्लस जीडीपी ग्रोथ होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और उसके अगले साल में भी शायद जीडीपी ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में रहे। तो मुझे लगता है जो स्टॉक मार्केट्स हैं अभी वो आने वाले 2 वर्ष में जो जीडीपी ग्रोथ 10% प्लस का रहने वाला है उसके ऊपर फोकस कर रही है, उस पर बेट कर रही है, आप कह सकते हैं, और उसको लेकर आज मार्केट्स अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो रियल अर्थव्यवस्था अभी जो हमारे सामने आंकड़े हैं वो कोई बहुत उत्साहजनक नहीं है, पर मुझे लगता है कि जो आने वाले 2 वर्ष हैं वहां पर हम बहुत अच्छी जीडीपी ग्रोथ देखेंगे इन द रियल इकोनॉमी। Puneet, clearly there's short selling, there's short covering in the cash market, there's hedging through the derivatives segment. There's a mixed bag of tricks by FIIs and DIIs, ultimately to make capital gain on their investment and income dividends as well. If you look at the cash market specifically, the Nifty Bank Index went up by 1% despite the ups and downs in stock movements. What is your take on the Nifty Bank Index sustaining its position in the market right now? Will it continue to go in the upward trend? So Arjun, if you look at
the Nifty Bank Index versus the Nifty Index over the past 1 year, the Nifty Bank Index has underperformed. While Nifty has more than doubled from the bottoms to reach 15,000 levels, Nifty Bank Index has not risen that much. And even if we compare it year on year, I mean, if I take it 1 year back and then compare it with last February, even then Bank Nifty has risen only about 10 odd %. But the overall Nifty has risen by almost 30%. So clearly banks have been underperforming so far, but no stock market rally can sustain without financial sector participating in it. So my guess is that banking sector or banking sector stocks will gain momentum going forward, relative to the larger other Nifty stocks. So you are right, yes, bank Nifty has gone up today while Nifty was flat. And my expectation is that going forward, next 3-4 months, 5 months, or probably 6 months, we will see Bank Nifty outperform Nifty in a broader sense. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। चंद्र नववर्ष के उपलक्ष्य में चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के शेयर बाजार आज बंद रहे। उधर जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.1% घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों 0.1% बढ़त के साथ चल रहे थे, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.5% नीचे चल रहा था। Moving on to the U.S. stock market. U.S. stocks traded in a narrow range yesterday after U.S. President Joe Biden said China was poised to eat our lunch, warning that raised concerns. Investors also remain cautious as the market is hovering near record highs on hopes of more stimulus, strong earnings and an improving outlook for the pandemic. Biden told a group of U.S. senators in a meeting to discuss the need to upgrade U.S. infrastructure that the U.S. must raise its game in the face of the challenge from China. The Dow Jones Industrial Average ended in the red but almost flat. The S&P 500 gained 0.2% and the Nasdaq Composite Index climbed 0.4%. Puneet, we're seeing this trend both in the European markets, U.S. markets and the Sensex and the Nifty, that there is trading in the narrow range. Both in intraday and by the end of the day itself. So this appears to be in sync. We're seeing a pattern in the global markets and the domestic market in terms of how trading is taking place. Is that true? That's true, Arjun. In fact, if you look at all market periods, usually global markets are now very well aligned with each other. So whatever trend persists in Europe or US, probably we'll find a similar trend in India also and other emerging markets, largely because the institutions, the foreign investors who are participating are common across these markets. So again, I would say that US is ruling at record high levels. Investors are skeptical about the longevity of the rally. They don't know whether valuations are fair or not, whether they can put in fresh money in these markets. A lot of investors in India that I speak with, they tell me that, look, we understand that our gains are there. They don't know whether to book the profits right now or whether to put in fresh money in the equity market. So people are skeptical, and it's fair enough, no, whether markets are at record levels. But my own sense is that going forward we'll see some profit booking by old investors. Probably some new money will start coming in. But my own take is that it will take another month or so for the markets to settle down and investors to take a call on the future direction of this market. पुनीत, हम आपका ध्यान अमेरिका के राष्ट्रपति की जो टिप्पणी आई है उसकी ओर ले चलना चाहेंगे। जो पिछला विगत राष्ट्रपति रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका पूरा कार्यकाल चीन के साथ कह लें, नूरा कुश्ती कह लें या वास्तविक कुश्ती कह लें, पता नहीं कौन सा शब्द अधिक उपयुक्त है, लेकिन पूरी दुनिया में एक संरक्षणवादी रवैये को बढ़ता हुआ हमने देखा। अब जो नए राष्ट्रपति अमेरिका के आए हैं, वह क्या फिर उसी जो नीति थी उसी को बढ़ावा देंगे या वैश्विक कारोबार में एक समरसता का दौर शुरू होने के आसार हैं? किस दिशा में जाता दिख रहा वैश्विक कारोबार? मनोज जी, मुझे लगता है कि जो ब्रॉड डायरेक्शन ऑफ द पॉलिसी रहा अमेरिका का, विच वाज टू सम एक्सटेंट प्रोटेक्शनिस्ट और पर्टिकुलरली एंटी चाइना पॉलिसी रहा,
वो डायरेक्शन ऑफ पॉलिसी तो नहीं बदलेगा, शायद वही डायरेक्शन रहेगा, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप जब इम्प्लीमेंट करते थे तो काफी शोर करते थे, स्टेटमेंट्स देते थे और एक माहौल ऐसा क्रिएट करते थे कि जिसमें लगता था कि बहुत एग्रेसिव वो मूव कर रहे हैं। लेकिन जो जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है करीब करीब वही स्टेप्स या वही डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, लेकिन वो कम नॉइज कम है, वो इतना कोई दिखाना नहीं चाहते कि वो कोई लड़ाई कर रहे हैं चाइना के साथ। आई थिंक इट इज अ वाइज पॉलिसी, लेकिन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल कि स्ट्रेटेजिक लेवल्स पर वो जो डायरेक्शन ऑफ द पॉलिसी है वो पहले की तरह रहेगी अमेरिका की, लार्जली प्रोटेक्शनिस्ट, पर्टिकुलरली वो चाइना से अपना बचाव करना चाहेंगे। यदि आप उनकी स्टेटमेंट देखेंगे कि चाइना इज ईटिंग अ लंच, जो बाइडेन की स्टेटमेंट वो दर्शाती है कि चाइना से अभी उनको काफी एप्रीहेंशन हैं, काफी शंकाएं हैं और वो पॉलिसी अभी नहीं बदलेंगे आराम से। Puneet, we are also seeing images and news from foreign networks showing pictures of President Joe Biden rescinding orders passed by the previous incumbent Donald Trump when he was president. So does that mean that the tariffs and the obstacles to trade have not been rescinded? They stay as it was passed by Donald Trump, and the suspension of operations of key Chinese companies in the US, are they being lifted, or is there a stay on that as well? So I think most of the very serious economic orders like sanctions and tariffs and Chinese companies being prohibited from being traded on London on US markets, I think many of these are going to stay for longer. I do not know if they will stay forever, but I'm quite sure that these will not be rolled back in a hurry by President Joe Biden. What he has rolled back so far are orders relating to visas and immigration and people and workers, more people-oriented kind of policies that are being, you can say, rebounded to some extent. But I think more tariff-related policies, I don't think they're going to be changed in a hurry. Probably it will take a few months and for at least a year or a couple of years for China to restore that confidence with which then US will probably tweak those policies. आइए आगे बढ़ते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पारिवारिक पेंशन में सुधार किया गया है। इसकी अधिकतम सीमा को 45,000 से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन यापन आसान होगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक बच्चे के या उसके माता पिता की मृत्यु के बाद 2 पारिवारिक पेंशन मिलने के लिए पात्र होने पर स्वीकार्य राशि पर यह स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा दोनों पारिवारिक पेंशन की राशि अब 1,25,000 रुपए प्रति माह तक सीमित रहेगी, जो पहले की सीमा से 2.5 गुना अधिक है। In more news, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today reiterated the centre's commitment towards development of farmers and workers in the country. Replying to the discussion of the union budget in the Rajya Sabha, Ms. Sitharaman hailed the budget as an important step towards Atmanirbhar Bharat. She said through the budget, the government will be able to reach out to those who are in need of immediate relief due to the pandemic. She said the provisions made for the upcoming fiscal will also help the government to lay down the roadmap for a sustainable growth structure. The finance minister said the budget is a blend of a stimulus package and a long-term growth model. She said building an Atmanirbhar Bharat reflects the aspirations of over 130 crore countrymen. She also stressed on the need to create an ecosystem which involves higher participation, providing better opportunities to the youth in the country. Highlighting the major schemes of the government, which she said helped people during the times of the corona pandemic, the minister informed that nearly 800 million people in the country were provided free food grains. Ms. Sitharaman said, under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, more than 80 million women beneficiaries were given free gas cylinders. She informed that the government announced the Prime Minister Garib Kalyan package worth 2,76,000 crore rupees in order to reach out to the poorest of the poor in the country, even during the tough times of COVID-19. Taking a sharp jibe at the opposition's charge of the budget overlooking the needs of the poor, Ms. Sitharaman enumerated a series of schemes by the centre, which she said were
all for the benefit of the poor sections of the society. भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को डिजिटल बीमा पॉलिसी जारी करने और डिजी लॉकर अपनाने की सलाह दी है। अपने परिपत्र में बीमा नियामक प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं को सलाह दी कि वे अपने आईटी सिस्टम में डिजी लॉकर सुविधा दें ताकि पॉलिसी धारक अपने सभी पॉलिसी दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए डिजी लॉकर का उपयोग कर सकें। परिपत्र में यह भी कहा गया कि बीमाकर्ताओं को अपने पॉलिसी धारकों को डिजी लॉकर के बारे में और इसका उपयोग कैसे करें के बारे में बताना चाहिए। Let's have a look at the oil market now. Oil prices today dropped for a second day, pulling further back from a one-year high after OPEC again lowered its demand forecast, and the International Energy Agency said the market was still oversupplied. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $60.70 per barrel, while WTI crude prices were around $57.70 per barrel. Puneet, I hope you're still with us on Market Mantra. Yes, Arjun. Puneet, we are getting from the IEA that the market is oversupplied, and yet you have the Saudi government saying that, see, we are cutting supplies, and therefore, in order to do that, we will raise prices and make a capital gain out of it. So how do you see the information coming out for the International Energy Agency in consonance with the strategy of the Saudi output, which is basically to cut supplies in order to raise prices? So, Arjun, there has been this, you can say, a tug of war between IEA and OPEC about the state or the fundamentals of the oil markets, where IEA has been consistently saying that, look, if you keep prices higher, then the demand for oil is going to go down, and they've been kind of betting for oil producing countries to increase production. On the other hand, Saudi Arabia, being the leader of the OPEC pact, has followed a policy of cutting production to support prices. So it's obvious that they're controlling production to keep prices higher in the $50 to $60 range, because that is what makes economic sense for them. Again, I have said this earlier also on this program, this artificial rigging of prices does not work in the long term. If you keep oil prices too high, I'm sure a lot of people will shift to electric vehicles and alternative sources of energy. So OPEC, I think, is following this policy in their own wisdom, but definitely it is going to hurt demand for oil products, and we're going to see oil consumption go down. I see the markets are definitely short of supplies right now, and probably going forward we will see OPEC step up production and bring down prices to a reasonable level of about $50 per barrel. But my sense is right now the markets are not reflecting the fundamentals reality of oil and demand and supply in oil markets. So clearly there is a mismatch in the fundamentals in the price that is being quoted in the market right now if you want to buy a barrel of oil. But what is the target price for the Saudi producers? What are they targeting? $60, $70, $80? What is the target? So we believe that the Saudi producers are happy at $50 per barrel, because that is where they say that they break even and that they make some profit, and they need profits to finance their activities. So I think they want to keep oil prices higher at above $60 per barrel. But U.S. shale will, of course, U.S. shale production will start going up at these levels, and they'll provide very effective competition to Saudi oil at $60 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने की चमक फीकी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 190 रुपए घटा 47,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। उधर चांदी 210 रुपए उछलकर 68,750 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा कमजोर हुआ, $1,819 10 सेंट प्रति औंस पर आ गया। चांदी थोड़ी सी मजबूत हुई है और $27 20 सेंट प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। पुनीत, यहां पर अब सोने की कीमतें नीचे की दिशा में ही आएंगी या फिर से इसकी चमक बढ़ने वाली है? मनोज जी, मुझे लगता है कि सोने की कीमतें जो अभी रेंज है ±5%, इतने ही रेंज में ये मूव करती रहेंगी, क्योंकि बहुत स्कोप नहीं है गोल्ड के ऊपर जाने का या नीचे जाने का। और क्योंकि डॉलर भी अब $90, अगर आप देखें जो डॉलर इंडेक्स है वो 90 और 91 के बीच में स्टेबलाइज कर रहा है, और गोल्ड का उससे काफी तालमेल रहता है डॉलर प्राइसेस से। तो मेरा अपना अनुमान है कि गोल्ड की प्राइसेस आने वाले समय में इस नैरो रेंज में रहेंगी फॉर नेक्स्ट 2-3 years. Also, there's a landed cost with taxes implied. बस यहीं पर हम आपको श्रोताओं की ओर से पुनीत बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज जी।
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark stocks closed flat, losing gains of the afternoon session amid profit booking. Sensex finishes at 51,544. Nifty settles at 15,163. Rupee appreciates by 11 paise against the US currency. And global shares hover near a record high after mixed US economic data. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.